Good morning, students. After completion of the buyback, we are going to start with the internal reconstruction chapter. Very simple chapter, internal reconstruction, where you need only basics. That is like assets reduced or liabilities reduced or asset increasing, liabilities increasing, such type of entries. And preparation of balance sheet. So what is first we have to understand what is reconstruction. Anyone who has started with internal reconstruction, otherwise I will start from scratch. रश्मि जी 0 से शुरू करना है या आपने पढ़ लिया है पूरा? सो लेट्स स्टार्ट internal reconstruction. First, what we are going to see in this chapter: introduction, meaning of internal reconstruction. Then we are going to see internal versus external reconstruction, methods of reconstruction, and journal entries. Okay. Now, first thing, what is reconstruction? Internal reconstruction means there are two types of reconstruction. Number one, external and internal. Internal means in between. As per Companies Act 2013, we are going to apply over here. And external reconstruction means amalgamation, absorption are called as accounting standard 14. Okay, so external reconstruction, we are going to see according to accounting standard 14. Meaning of reconstruction. When a company has been making losses for several years. See, my dear friends, if you are in losses for many years and you want to survive your company, then how are you going to survive it? Management has to take some bold decisions. They have to request their creditors, please reduce our liabilities. They have to overstated asset. They have to change the asset figures which are not actually assets, like goodwill. If goodwill is appearing in the balance sheet, tell me, if you are making huge losses in past, are you going to show goodwill in the asset side? Not at all. So when a company has been making a losses for several years, the financial position does not represent a true and fair view of the state of affairs of the company. In this situation, assets of the company are generally overvalued, which leads to depicting the high net worth than the true picture. Means your assets, if they are overvalued, are you going to record same overvalued figures in your balance sheet? No. We have to reconstruct our balance sheet. We have to reorganize our balance sheet. We have to reduce our assets, reduce our liabilities. So this is called as reconstruction. Friends, such type of organization where you need to reconstruct or reorganize your affairs, that are transactions and events. Reconstruction is a process by which affairs of the company are reorganized by revaluation of assets, reassessment of liabilities, and writing off huge losses. एक बार हिंदी में बता देता हूं पूरा. देखिए, फर्स्ट थिंग, रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट थिंग समझ लीजिए. रिकंस्ट्रक्शन ये कंपनीज एक्ट 2013 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके डिफाइन किया हुआ है, एंड S14 में
एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, ये चीजें आपने ऑलरेडी सीख ली है, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? तो जो कंपनी पिछले कितने सालों से लॉसेस में है, जिसका दिया बुझने का टाइम आ चुका है, सिंपल लैंग्वेज में, पर वो दिया हमने बचा लिया बुझने से। कैसे? तो उसमें तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो ये प्रोसेस जो है ना, वही रिकंस्ट्रक्शन है। जो कंपनी ह्यूज लॉसेस में है और वो ह्यूज लॉसेस से हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं, उसके एसेट जो है उसको रिवैल्यू करेंगे, वापस कैलकुलेट करेंगे। रीअसेसमेंट मतलब वापस कैलकुलेशन करना लाइबिलिटीज का, लॉसेस को परमानेंटली मिटा देना और वापस से नई दुनिया शुरू करना, इसको हम लोग बोलते रिकंस्ट्रक्शन। आई होप आप सबको मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन समझ में आया। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, internal versus external reconstruction. What is the difference? Existing company is not going to liquidate in case of internal reconstruction. No, my dear friends. Your company will continue as it is. It is not going to liquidate. But here, existing company is going to liquidate. Okay, so external reconstruction mein, your management is going to change. Reduction of capital. Yes, there is reduction of capital. And external reconstruction, there is no reduction of capital. There is a fresh capital. Legal position. Section 61 and 66 are applicable for reconstruction, and section 232 is applicable for external reconstruction. Methods of reconstruction. Try to understand. Now, I'm going to ask you this question. So, everyone please concentrate. पूजा जी, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा. How many methods of reconstruction? Very simple. So आपका रिवीजन हो जाएगा. So concentrate. Now, if you understand methods very easily, then this chapter is nothing. There are total 5 methods of internal reconstruction. How many methods are there? 5. 5. Number 1, alteration of share capital. Alteration means total value will not change. That I'm going to tell you. Total value is not going to change. Then what is going to change? Number of shares and face value. What is going to change? Number of shares and face value. Whether there is alteration means total value will change of share capital. No. Previously you had 1 lakh shares of rupees 10 each. Now you will have 10 lakh shares of 1 rupee each. So 10 lakhs, 10 lakhs. Total value is 10 lakhs. Previously 1 lakh into 10. Now 10 lakhs into 1. So ultimate share capital is not going to change. That is called as alteration of share capital. Alteration means total value is not going to change. It will be as it is. Next. Variation of shareholders' right. Now what is variation? Variation means voting rights will be changed. Some examples: change in the rate of dividend of the preference shares, or it might be conversion of cumulative preference shares into non-cumulative preference shares. In that case, right of dividend, voting rights are going to change. So this is called as variation of shareholders' right. Third one, reduction of share capital. Previously you had 10 lakh rupees share capital.
Now you will have 1 lakh rupee a share capital. You will reduce your share capital. Ownership will get reduced. Share capital is ultimately their owners. And why they will agree? Because they want to survive their company. Compromise or arrangement. Who will compromise? Third party liabilities, creditors, debenture holders, outstanding liabilities. They will compromise. They will think, ठीक है, पूरा ग्लास भर के पानी था, एटलीस्ट आधा ग्लास तो पानी पीने को मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिला, सो कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ तो दे दीजिए, समथिंग यू पे बैक, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज. And method number 5, surrender of shares. Now, what is surrender? I will explain it in detail. So, these 5 types, 5 methods, you have to identify. Okay? चलिए 5 मेथड्स को अच्छे से बता दीजिए. कशिश, याद कर लो नाम बेटा. 2-3 लोग याद करोगे तो इजीली समझ में आएगा. निसर्ग, अनम्यूट कर दो इनको. 5 मेथड बोल पा रहे क्या, देखने दीजिए. हाँ जी, 5 मेथड्स. यस कशिश. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. सर गुड 5 मॉर्निंग. मेथड्स है. सबसे पहले ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड मेथड है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, थर्ड है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. रिडक्शन वाले में जैसे जो होल्डर्स Don't explain. कैपिटल, Yes. Fourth method, only names. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फोर्थ मेथड कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, एंड फिफ्थ मेथड Surrender. सरेंडर. यस Pooja, you want to explain? चलो बोले बेटा एक बार, मतलब नंबर्स याद हो जाएंगे. सर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मींस चेंज, मतलब नो चेंज इन अल्टीमेट शेयर कैपिटल, मतलब अमाउंट, और या तो अमाउंट चेंज होगी या अमाउंट नहीं, टोटल वैल्यू नहीं चेंज होगी. टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगी. सेकंड वन, सेकंड वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट. इसके वेरी अंदर गुड सर, बेटा. इसके अंदर सर मतलब शेयर होल्डर्स के राइट्स में चेंज आएगा. ओके ठीक है, वोटिंग राइट्स में चेंज हो सकता है, डिविडेंड रेट बदल सकता है. ओके नेक्स्ट. थर्ड आता है सर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. ये सर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर की जो पर शेयर वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी. वेरी गुड एंड बेटा. फोर्थ आता है अरेंजमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. कॉम्प्रोमाइज वेरी एंड गुड. अरेंजमेंट. हाँ जी, एंड लास्ट वन इज लास्ट है सर शेयर सरेंडर. वेरी गुड बेटा. सो 5 मेथड्स याद हो गए आपको. यस. सर ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या है, एक बार हिंदी में बता दो. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मीन्स क्रेडिटर्स लोग अपना पैसा छोड़ देंगे. क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, मतलब वो खुद का शेयर थोड़ा सा छोड़ देंगे. मतलब डिबेंचर होल्डर्स दे आर आउटसाइडर्स नो. पहले ओनर्स लोगों ने ये किया. ये जो है ऑल्ट्रेशन, वेरिएशन, रिडक्शन एंड सरेंडर. और कॉम्प्रोमाइज जो है वो किसने किया? कॉम्प्रोमाइज बाय डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. गॉट द कॉन्सेप्ट? यस. चलिए. Many students, they have problem to join at 7 o'clock. I don't know why, but you must have the habit to join at 7 o'clock. Yesterday, I slept at 1:30, but I reached to class at 7 o'clock. Okay, 6:50. So it's very important, and you don't have to travel also, but still we are not attending. So this shows we are not
consistent in our classes and attending these lectures. So it's a request to all of you to join at 7 o'clock, and if possible, join at join on Zoom classes. Many students, they are attending on YouTube. If you interact, if you do not have fear, it will boost your confidence. And this activity, we want to spread it among all students. So it's request to those students who are watching on YouTube, please join on our Zoom ID. Okay. Chalo. So let's start. Shayanto, you are late by 15 minutes. Chali. Next. Now we are going to understand one by one concept. रश्मि जी म्यूट कर दीजिए. ये रियलमी, वीवो, ये नाम क्या है आप लोगों के? प्लीज अपने अपने नाम डालिए. चलो, let's start. Alteration of share capital, I already explained. Subdivision and consolidation of shares. Subdivision and consolidation of shares. Now, what is the meaning? If authorized by articles, by passing a special resolution, notice to register within 30 days, you can subdivide and consolidate shares. We are going to see entries. Don't worry about this. Conversion of fully paid shares into stock. Conversion of fully paid shares into stock. Stock means bundle of shares. How we are going to pass this entry? Very simple. Suppose equity share capital. In my example, previously 1 lakh shares into 10 rupees now gets converted into 10 lakhs of rupee 1. 10 lakhs of rupee 1. So I will write entry equity share capital account debit. Face value 10, 10 lakhs. To equity share capital, face value rupee 1, 10 lakhs. See, my dear friends, you have to mention face value in the bracket. आपको ब्रैकेट में फेस वैल्यू मेंशन करना है. Face value 10, face value 1. What it indicates? There is a change in total value? No, it is change in only face value. It is change in only number of shares. There is no change in the value. Total value will remain same. So previous capital as a credit balance, simple. Capital credit, liability credit, expense debit, income credit, and asset debit. So 5 simple points you have to remember. Asset debit, liability credit, expense debit, income credit, capital credit. So one capital which was 10 rupees previously, we are going to change, we are going to shift to rupee 1. So capital debit, so your original balance sheet face value 10 rupees is getting cancelled and new face value will be appearing in your balance sheet. This is the meaning of subdivision and consolidation of shares. Subdivision, and suppose if from 1 rupee you now shifted to 100 rupees. You now shifted to 100 rupees. So what will be the entry? Equity share capital face value 1, 10 lakhs to new face value rupees 100. This is called as consolidation of shares. Okay. So 1 rupee gets converted into face value of 100. So you consolidated number of shares. So now you have 1 lakh shares. You had 1 lakh shares, sorry. 10 lakh shares, and now you have 10,000. 10,000. So this is called as consolidation. I hope you are clear with the concept. Easy, Che? Ekdam easy? Yes, sir. Second one.
Variation of shareholders' right. When company has issued different classes of shares with different rights or privileges to such share, example, rights as to dividend, then it is called as variation of shareholder rights. So I already told you about variation. Variation, we do not have any entry. Okay, our entry might be previously 5% preference share capital, now 6%. So 5% preference share capital account debit to 6% preference share capital account. So this will be a variation. Entries are very simple. Reduction. Now reduction is of two types. Reduction in the paid up value only, means face value will remain as it is. Face value remain as it is. So for example, previously we had 100 rupees face value. Now it is 90. So share capital account debit 90. Share capital account debit 90 to capital reduction 90. And reduction in the face value, share capital account debit to share capital account to capital reduction account. ठीक है. So see, if change in the nominal value, what it implies? That share capital face value is getting changed, means previous share capital 100. Now new face value is 10. Remember friends, here total value will change. Sir, alteration mein total value will not change. Then face value will change. What is not going to change? Number of shares, same. Number of shares previously 1 lakh shares or 10,000 shares. Then it will be 10,000 only. It is not going to change. What is going to change? Face value is going to change or paid up value will change. So it is mentioned in the question. So don't worry. It will be mentioned in the question whether face value is getting changed or paid up value is getting changed. Remember. So number of shares into 90 rupees, share capital to capital reduction, and reduction in the face value, we will pass compound entry. Double entry, remember, only paid up value. Capital reduction is a temporary account and it will be transferred to capital reserve. Why? Because it is your profit, but not routed through P&L. It is not day-to-day profit. Your capital is like your liability and it is reduced. So your capital is reduced. It's a profit for the company. It's a benefit for the company that their liability is getting reduced. And when it is reduced, then it is transferred to capital reduction account, my dear friends. So entry will be share capital account debit to capital reduction. And in case of change in the nominal value, there will be a compound entry. Share capital account debit to share capital having different face value, but same number of shares. And balancing figure will be a capital reduction. I hope you are clear with the concept. Next, reduction of share capital over compromise. Outsiders' liabilities will get reduced. Such arrangement involves
sacrifice by shareholders or creditors or debenture holders. Surrender of shares. Now this is very simple, and these entries are also very simple. Yes. Suppose previously my equity share capital held by equity shareholders. Try to understand this concept. As a company, I am a company. I will take these shares from equity shareholders. So take shares, and these shares, out of these shares, I will give something to debenture holders or creditors. So who surrendered? Equity shareholders surrender. And to whom I paid? To debenture holders. From my pocket? No. Out of shares which are surrendered by company, by equity shareholders, surrendered by equity shareholders to company. Who surrendered? Equity shareholders surrender. Remember, my dear friends, surrender means to take from shareholders and to give it to debenture holders. एकदम सिंपल है. शेयरहोल्डर से सरेंडर करवाना एंड डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देना. बेटा इससे सिंपल कुछ भी नहीं है. आई होप आपको अच्छे से समझा होगा. व्हाट इज शेयर सरेंडर इज. एक हाथ से लो, एक हाथ से दो. किसके पास से लेना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स से. किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को. ये भी हो सकता है कि 100 शेयर्स उनसे लिए गए और डिबेंचर होल्डर्स को 80% ही पेमेंट किया. बचा हुआ 20% आपका फायदा है. तो शेयर सरेंडर में जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट लास्ट में यदि बचता है तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए. आया समझ में? इट इज वेरी सिंपल. नाउ व्हाट विल बी द एंट्री? माय शेयर कैपिटल इज गेटिंग रिड्यूस. सो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट देंगे. Yes, so you can see here equity shareholders are allotted to debenture holders. Their shares are allotted to debenture holders. So it's like agent. Journal entries. What is the journal entry? Surrender of shares. You only think. चलो thinking का मौका देता हूं. And you can tell me क्या एंट्री होगा. Those who want to answer they can raise their hands. भले गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you are getting a wrong answer, it's okay, my dear friends. रश्मि को आंसर देना है बस. कशिश को नहीं देना बेटा. किरण जी आपको नहीं देना है आंसर, लक्ष्मी को देना है. चलो बहुत बढ़िया. गलत हुआ तो भी चलेगा बेटा. शायद तो ट्राई करो बेटा, कुछ नहीं होता है. ये शायद तो व्हाट विल बी द एंट्री? म्यूट कर दीजिए निसर्ग. अनम्यूट कीजिए. हाँ चलो शायद तो व्हाट विल बी द एंट्री? Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. हाँ Yes, sir. In case of surrender of shares, the योर I equity share will capital is going to reduce and you will open share surrender account. So yes, what sir. will be the entry? Sir, the entry would be share surrender account debited to equity share capital. You want to With that, increase share capital or you want to decrease share capital? so surrender of shares, surrender of shares means the company is taking the shares from the equity share capital, equity shareholders, and So equity share giving capital is reducing or increasing? the equity share capital is reducing, sir. Reducing. Capital को कौन सा बैलेंस होता है? So capital means your liability. Liability is a credit balance, sir. तो आपने क्या दिया फिर? Uh, रिड्यूस करना है तो आपने क्या देना चाहिए था?
credit means I have to credit it, sir. So will it be this way, sir? Like creditors account will be means the shareholders account will be debited to capital reduction, and then share surrender to equity. Simple. I will tell you, Rendo. Equity share capital account is going to reduce. So capital account will be debited to share surrender account. Is it difficult or easy? I'm Easy. telling you to reduce capital. Reduce. How we are going to reduce? By giving opposite effect. How you are going to increase? By giving same effect. Yes, sir. Okay. Don't get confused. I'm telling you, no, कि surrender of shares account open करना है, but capital reduce करना है. So capital को debit देंगे. लाइबिलिटी रिड्यूस करना है तो उसको डेबिट देंगे, एसेट रिड्यूस करना है तो उसको क्रेडिट करेंगे. अपोजिट इफेक्ट यू हैव टू गिव ना. Sure. अंडरस्टूड? Yes, sir. So actually, the confusion was I thought like I will first we will like take we will debit the creditors account and then uh No. when the creditors account debit to capital reduction and then Yes. That will be the second entry. Now reissue of second. share surrender. Now, yes. So reissue means how you are going to pass. You are reissuing for cash. Means whatever number of shares you surrendered, from that shares, you are giving offer to public. Please take these shares and give me cash. What will be the entry? बोलिए. Yes, What yes, will be sir. the entry? Issue for cash. Okay, sir. So reissue for cash. Reissue for cash. Okay. Um, the Bank balance will increase. bank account debited. Bank balance will increase. Okay. To Bank account debited to capital reduction, because we capital. don't have to issue from my company's pocket. Okay. You will issue these shares from this share surrender account. So entry will be share surrender account debit to equity share capital. So So your that's a temporary account your created. your old shareholders name will get cancelled, and here it will be new shareholder name in your shareholder list. In your shareholder list, you have new number of shares. So your previous names of shareholders will get cancelled. I want to improve your thinking. Though you are getting a wrong answer, it's okay. But try to improve your thinking. Cash or bank account will be debited. But see, nothing I have to issue from my pocket. So to capital reduction, I'm getting a cash, but without having any liability. Yes, sir. So capital reduction is my benefit. I'm getting a cash. And I have to issue shares out of share surrender, which I already surrendered, which equity shareholder already surrendered, old shareholders. So their shares will now get cancelled, that share surrender account, to equity share capital account. Simple. Chalo, one more time. Shant, all these two entries. Surrender of shares. What will be the entry? Yes, sir. So two parts are there: surrender of shares, and then you said reissue of surrendered shares. No, I So want for the only surrender of shares, one by surrender one. of shares. Okay, sir. So for surrender of shares, equity share capital account, the old Debit. shareholders account will be debited to Hmm. shares surrendered account. Second entry. And for the second case, reissue, um, you said like for reissue for cash, cash is coming in, so cash or bank account will be debited to capital reduction account. Since it's not going from the company's own pockets, and a temporary account as well. And secondly, shares surrendered account will be debited to new equity share capital account denoting the Very new good. shareholders. Very good. Very good. Now next entry. Thank you, sir. Now
Discharge of existing liability by issuing surrendered shares. Existing liability you are going to discharge. Now tell me, debenture holders or creditors, you are going to pay them out of share surrender. So liability is getting cancelled. Yes. So liability is getting cancelled. आजू बाजू का आवाज म्यूट रखो. So liability account will be debited and capital reduction account is credited. So I'm not paying from my pocket. Company is not paying. Share surrender account debit to equity share capital. Simple. So liability account debit to capital reduction and share surrender account debit to equity share capital. These are the entries. So here liability is getting cancelled. Third one. Balance in share surrender account. Where are you going to transfer it? Share surrender account debit to either you will issue shares or to capital reduction. And these entries are over. Share surrender is very simple. Difficult है क्या? Not at all. Now we are going to see some final journal entries. Yes, note down these journal entries. Write down one by one and you only answer it. Huh? You people, students. First one. Write down. Reduction in face value. First entry, write down. Reduction in face value. Galaxy M30. Please write your name. What is your name, Galaxy M30? Unmute yourself. Chalo. Palak beta, can you tell me this entry? Yes, Palak. ठीक है, कोई बात नहीं. यदि नहीं बोलना है, इट्स ओके. लक्ष्मी जी बोलिए. Yes, sir. Equity share capital account debit, whole face value. Equity share capital, new face value to capital reduction. Very good. Old face value to equity share capital. New face value to capital reduction. Write down all these entries. There are 14 entries. Second one. Kashish beta, second one is reduction in paid up value. See, you are doing it for the first time, but still this chapter is very simple. Reduction in paid up value. Kashish, what will be the entry beta? चलो फटाफट बोले. लक्ष्मी बोल दे. चलो. Equity share capital account debit to capital reduction account. Very good. Those who want to answer, please raise your hand. Equity share capital account debit to capital reduction. कशिश तो आंसर ही नहीं दिया तूने. माइक ही अनम्यूट नहीं किया आपने. सर वो नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं बार बार लीव हो रही. ठीक है. थर्ड एंट्री. Share surrendered
and cancelled subsequently. Yes, Kashish. The equity share capital to share surrender and share surrender account debit to capital reduction. Very good, beta. And share surrender account debit to capital reduction. You can write this entry on the rough page and you can share it afterwards. Rashmi beta. Next entry. Downward revaluation of asset. Assets नीचे गए. Yes, sir. Revaluation account debit to asset account. हाँ, so revaluation account नहीं होता है. We are transferring it to capital reduction account. Okay. Okay, sir. So capital reduction account debit to asset. Next one. Lakshmi, upward revaluation of asset. Asset account debit to capital reduction. Any other student who want to try? They can raise their hands. Please raise your hand. शायन तो कर बेटा, गलत हुआ तो आई विल बी देयर. पूजा, पलक, सुनील, होने दीजिए गलत, कुछ नहीं होता है. क्या होगा, 2 बार गलती होगा. Debenture holders or creditors sacrificed some amount and paid off. कुछ अमाउंट उन्होंने सैक्रिफाइस किया और बाकी का अमाउंट हमने पे किया. बैलेंस पेड ऑफ. बैलेंस पेड ऑफ. यस पूजा. Sir, debenture account debit to capital reduction to cash To cash or bank. to capital reduction. To capital reduction. To cash or bank नहीं, to bank, because these payments are normally made by bank. Yes sir, बैंक से जो पे किया वो आएगा, कैपिटल रिडक्शन से जो अमाउंट सेक्रीफाइस किया वो आएगा. फायदा हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ. उतना 100 रुपए पेमेंट था, we paid 30. 100 out of 100 we paid 30. So 70 is my benefit. So that benefit I will transfer to capital reduction. So CR is a capital reduction here. CR means every time capital reduction. It's not a capital reserve. At the end, it is going to transfer to capital reserve. Unrecorded. Now this is very important. Unrecorded liability paid or contingent liability paid. Unrecorded or contingent liability. Previously it was contingent, means not in balance sheet, and we paid it. Yes, Lakshmi beta. Yes, sir. Capital reduction account debit to bank. Very good. Capital reduction account debit to bank account. There is no liability, but we paid it because this is unrecorded. So bank balance goes out and capital reduction account will be debited. Simple ekdam. Expenses of on reconstruction paid. Reconstruction के expense पे किए. शायद तो जो भी एंट्रीज नहीं आई मुझे बताने क्या लास्ट में. यू हैव टू टेल मी इसमें से कौन सा एंट्री गलत हुआ था. सुनील कुमार, कैन यू टेल मी दिस एंट्री? Expenses on reconstruction. Okay, Rashmi.
Tell me this entry. Yes. Expenses on the construction account debit to bank account. No, beta. Oh, Expenses account is not open. Why expenses? Because we are not going to open P&L account. So there is no P&L. So capital reduction account will be debited. Got the concept? okay, sir. So don't open expense account. Why? We are not preparing P&L. We want to reduce our losses. Why you are opening P&L account? No. Capital reduction account debit to bank. Simple. Next. Writing of losses and goodwill. Writing of losses and goodwill. Kashish. Yes, sir. Sir, capital reduction account debit to goodwill to loss. Very good. Goodwill has a debit balance. We will Yes, give sir. credit, So it and will losses be has debit credit. balance. Yes, we will give credit. Very good. 10 number. Balance in capital reduction transferred to capital reserve. Pooja. Capital reduction account debit to capital reserve account. Very good, beta. Capital reduction account debit to capital reserve. Reserve account. Number 11. Variation of shareholders' right. That is old percentage preference share capital account debit to new percentage preference share capital. So previously they have 5% dividend or 8% dividend. Now they have 4% dividend. Next. Conversion of fully paid shares into stock. Fully paid shares into stock. Equity share capital to equity stock. Equity stock. Yes. And here we have finished with all entries. And last one is alteration of share capital. Old share capital account debit to new share capital. There is no change in the total value. Total value will be same. Total value 12 and 13 entry ka same. So no capital reduction. Number of shares and face value will get changed. Yes. So कितने एंट्रीज गलत हुए थे? शायद तो आपके कितने एंट्रीज गलत हुए बेटा? You can take a screenshot if you want. All these entries. So here we have finished with this chapter. Is it difficult, Shanto? No, sir. Now, yes, sir. The So journal entry, that first portion was only there was a confusion there, sir. But now it's clear, sir. okay. हमारे इधर वेदर का प्रॉब्लम है. So due to bad weather, now lights, we are facing electricity issue. So it might happen that
electricity, we will face the problem. Okay, so it might happen that I may exit from the Zoom. So please make sure that I'm there or not. Downward revaluation of asset, you can take a screenshot. There was heavy rain yesterday in our area. Okay. 6 and 7. लाइट है क्या, गई रे? फ्लक्चुएट 8 9 10 11 12. So if you understand these 13 entries, this chapter is not at all difficult. So if I rank accounting standards and difficulty level of internal reconstruction और buyback, और उसके पहले क्या किया था हमने? Cash flow and The cash financial flow. cash flow and financial statements. So Shanto, can you rank difficulty level, accounting standards, and these 4 units? Yes, sir. So like the number one, the most difficult would be financial statement of companies. Okay. Secondly, cash flow statement. Hmm. Thirdly, sir, internal reconstruction, and And like buyback is very buyback, simple. it was the easiest, like comparatively. No problem. All chapters are easy. That just I want to tell you, nothing is difficult. Please do not have a mindset that something is difficult and something is very difficult and easy. No, not at all. See, these chapters are also very simple. For example, financial statement, you just have to put down your all balance sheet items properly. Cash flow statement, nothing difficult in that. Direct method versus indirect method. So if you tell to yourself that everything is simple, you won't find a single problem in exam. And in exam, make sure that you know at least methods. If you understood these 14 entries, what is difficult in the internal reconstruction? Nothing at all. You just have to reduce your assets or liabilities, or you have to just put down these figures to capital reduction account. At the end, capital reduction account is transferred to capital reserve, and liabilities might be there. There may be unpaid, unrecorded liability, then capital reduction account will be debited. Unrecorded assets, normally unrecorded assets are not there, and you have to change variation preference shares, or there may be alteration of share capital, and there is a concept like share surrender account. So Even expenses, you said like the expenses to be paid will be capital reduction debit to bank. So like bank account, yes, very good. Those students who are doing it for the first time without watching into previous batch lectures, so I think now you found it very simple. All these problems will be simple. I know there is some limited time because this batch is not actually we are running through a regular batch. We are running this batch as a revision batch. We are expected this recorded plus regular. So I know you're finding some difficulties because back-to-back sessions we hold. So make sure that you will solve this topic, all these examples today itself, or might be after branch account. So previous chapter, please, please, please watch branch account sessions, because now we're left with only last chapter, branch accounts. And after that, this batch will get over for accounting. Okay. And if you think, yes, you want some detailed explanation in Hindi of all Sanket sir lectures, so you may contact Pimpri Chinchwad branch of ICAI. So there we will get the full lectures, okay, of mine. All 100% will be, but in the Hindi, for Hindi version.
Okay, so I hope we are done with this chapter. We'll take a small break. So break के उस पार action part of illustrations. तो break के बाद बिल्कुल भी मिस मत करना. हम लोग पूरा का पूरा ऑल डिटेल में ये देख लेंगे. ब्रेक होगा 10 मिनट, 8:10 to 8:12, क्योंकि नीचे जाके चाय पी के आता हूँ मैं तो ऑफिस से, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा. ओके, सो टेक अ ब्रेक. वी विल मीट एट 8:10. चलिए निसर ब्रेक ले लेना.
Open study material illustration 1. But please, in these 2 days from रिस्की झाले हे खेळाच नाही हे नकोच नाही वरती नाही जाणार चलिए on 31st December 2001 B Limited 20,000 shares rupees 10 equity share as authorized capital and the shares were all issued on which 8 was paid up. So 20,000 equity shares and 8 is paid up. 8 is paid up. In June 2002, the company in general meeting decided to subdivide each share into 2 shares. So this is called as alteration. Previously, 20,000 into 8 shares. Write down on question itself. Then 4. So if face value is reduced to by 2, I mean, if you divide by 2 for face value or paid up value, then multiply by 2 for number of shares. 40,000 shares into 4. Correct? And now from 40,000 into 4, you convert it to 80 rupees. So you multiply by 20. So 40,000 divided by 20. So 40,000 divided by 20 is 2,000. So 1,60,000. How this will be appear in your balance sheet? So 1,60,000, but having different face value and paid up values. How are you going to present the answer? So check it. You can check the answer. 10 to 5 and then 5 to 100. And narration being subdivision of 20,000 shares to 10 each and 40,000 shares of 5 each. And then consolidation of, so previously it was a subdivision and then consolidation. Check the answer. सुनील भाई इजी है ये? पूजा इजी? निसर्ग उनको बोलने का मौका दीजिए. Yes, sir. Easy. And then notes to accounts, share capital 31st December 2001, 2 lakh rupees.
and 1,60,000, it will be appearing like 20,000 equity shares of 8 each. And in next year, 40,000 into 4 each. That is on 31st December 2002 and 31st December 2003, 2,000 shares of 80 each. So your authorized capital previously 10, 5, and then 100. So authorized capital and issued and subscribed capital. So presentation is also asked. Balance sheet presentation. Authorized capital, issued capital, and subscribed capital. You can check the answer. So previously 20,000 shares of 10, then 40,000 shares of 4, 5 each of 4 paid up, and 2,000 of 100 and 80 called up, paid up. शायद तो easy है या difficult है बेटा? Yes, Alteration and then subdivision and then consolidation. Presentation you can write it in exam. Yes, sir. Chalo, next question. Illustration 2. Now this is the conversion into stock. I'm giving you 2 minutes to write the answer. Means you just have to read the question and tell me the answer. Chalo. You have 2 minutes. खुद से सोचो 3 minutes लो. चलो. Start. 3 minutes. चलो बस हो गया. Easy. Yes. Yes. Yes, Rashmi ji, sir. what will be the answer? Yes, sir. एंट्री बताओ सर. हाँ जी. यस सर. फर्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट जो 4 लाख एंड देन जब फिर हम इसे स्टॉक को फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर स्टॉक नहीं, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर स्टॉक नहीं होता, इक्विटी स्टॉक होता है. ओके सर. इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इजी है बेटा. यस सर. एंड बैलेंस शीट भी बना लोगे आप लोग. यस Yes, सर. sir. Yes. Come to question number 3. Okay. Now this is balance sheet question. Such type of questions you may get in exam. How many marks? 8 marks to 12 marks. Weightage 8 marks to 12 marks. Every adjustment normally 0.5 or 1 mark. And
4 marks for your balance sheet preparation. I'm going very slowly now. I will give you time for writing this, how many of you have done already this chapter? Yes. Don't lie. If you are done, you can tell me. Sir, yes, I have completed. Please raise your hand, those who have already done. रश्मि आपका हो गया बेटा? नहीं सर, मैं देखी थी रिकॉर्डेड लेक्चर, पर मेरे को उतना समझा नहीं तो मैं छोड़ दी। क्यों बेटा? मतलब इस टाइप से नहीं, मतलब समझ में आ रहा था, मेरे को आया था समझ कुछ बात, फिर मैं की नहीं। अच्छा अच्छा। और अभी? अभी सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया, आपके फॉर्मेट से मुझे बहुत समझ में आता है। अच्छा, मतलब रिकॉर्डेड में तुझे समझता नहीं है? हाँ? सर सारे नहीं, मतलब ऐसे नहीं सर, वो था फॉर्मेट वगैरह तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, current liability, trade payable, short term borrowing, bank OD, other current liabilities. Assets, non current assets, current assets, share capital. You can check here that you are getting the negative figure, 5,35,000. 5,35,000. Negative figure means you are in huge losses. What it implies? You are in huge losses. ओके, सो आप लोग बहुत बड़े लॉस में हो, ये दिखाता है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन यू कैन फाइंड इट इन एग्जाम। Current liability, trade payable, short term borrowings, other current liabilities, assets, property, plant and equipment, intangible assets, non current investment, current assets, inventories and trade receivable. Notes to accounts. See, there is a debit balance in the profit and loss account, so you can write over there hidden adjustment. Though it is not given, we are going to write it off. I don't know about adjustment, but in exam, if there is no adjustment, still we are going to write it off to capital reduction account. डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करेंगे एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट P&L डेबिट बैलेंस इन द फ्यूचर. देन लाइबिलिटीज आर देयर, एसेट्स आर देयर, गुडविल, गुडविल को भी लिख के रखने का, हिडन एडजस्टमेंट. वी आर गोइंग टू राइट इट ऑफ. डूबती हुई कंपनी का गुडविल होगा क्या? इफ कंपनी इज गोइंग टू लिक्विडेट, इज गोइंग टू फिनिश इट ऑफ, then in that case there will be no goodwill. You are in huge losses. Okay, so goodwill, write it, hidden adjustment. What will be the entry? Goodwill normally has debit balance, so we'll give credit, and capital reduction account debit. Though it is given, not given, we are going to write it off. Now what you have to do, whenever you are finding a difficult entry, I will read it. If you find this entry difficult, you can write IMP over there. First, I will give you 15 seconds to 20 seconds to think on it. What entry you are going to pass. If you are getting a wrong entry, it means you have to write IMP. Suppose silly mistake, don't write IMP. Okay. But if you think, no, this entry I have to revise it afterwards. And this is the pattern for studying all other subjects also. In income tax, you solve it by your own. In costing, practical subjects, theory subjects, you have to write down all at least 3-4 questions daily. So if you ask me, sir, how to prepare for the exam, why students are getting fail, they never prepare for, whenever I was studying, I always think after 30 days whether I will I can recall it or not. And for that purpose, I always maintain my small notebook, pocket book, formula book. This will help you for revision. CA course is not a difficult one. This is a vast course, and students are finding difficult when you have to recall first day chapter on 30th day.
I have many students in Pimpri Chinchwad branch where I found that because normally I take lectures, normally I take all lectures on this app only. And what problem we are facing? Out of 40-50 students, only 20 students attending classes. They registered for the course. And out of that 20 also, 4 to 5 students are sincere. See the result. They will read first. They will, before class, I told them, I normally tell them ki which will be the next chapter. Okay, so sincerely, first they will read by their own, then they will attend the class, they will solve questions by their own, and then they will do revisions on Sunday. And this you have to do for not for 1 month. You have to do this exercise for almost 3 months, 6 months, 8 months, and then better you are going to pass. There is no shortcut for your success. Remember this. And while doing this work, what you have to do? I don't have to think today's part. Today you are going to understand it very properly because today you are in that phase. I always have to think whether I can recall it after 2 months. And then what I have to do? All IMP adjustment, index, categories that will help me at the time of revision. At the time of revision, don't read all questions. First do 2-3 C category questions. Then do only important adjustment. Try to solve only 1 and 2 questions afterwards. Now at the time of learning this chapter, solve each and every question after the class by your own. Maintain your notebook, 100 pages book properly, 400 pages book properly. This will help you out for passing your exam to score more than 80 marks. If you are sincere for your study. And see, costing and income tax will always, you need some common sense. Whenever you study any chapter, first you ask to yourself, why institute introduced this chapter in our syllabus? What is the aim to introduce this chapter? Why we are paying tax? Why there are different type of heads? If I charge only one type of head income, whether it's possible? No. Therefore, we categorize into different heads. If you ask me provisions today, I can recall it, or suppose if I don't recall, at least I know why government introduced this tax policy. You always ask to yourself, you stand like government. I want to impose tax on the SSC. And then how I will create this income tax? You always think from the lawmaker, not from the angle of law learner. And then you will find it very simple. ओके बस हो गया आज का ज्ञान, नहीं तो बाबा ज्ञान ही बोल दोगे आप, पर यह ध्यान में रखना। और आप लोगों की मेहनत, सर आई वॉज स्टडिंग फॉर ओनली 4 hours, बेटा यू आर गोइंग टू फेल। डोंट गिव एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ। और मेरे सामने एक लड़का आके बैठता है डेली बेसिस पे, ही ऑलवेज गिव्स एक्सक्यूजेस, सर आज है ना मुझे आज जाना पड़ेगा, आज मुझे लैपटॉप लेना है, रोज नए बहाने। और ये जो है ना, हाँ 2 दिन सिंसियर करता है, तीसरे दिन बैक टू ट्रैक। ये नहीं चलेगा फॉर सीए कोर्स। कंसिस्टेंटली सिर्फ 8 महीने पढ़ना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। देखिए इस बात पे सोच के। चलो, द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम of reorganization. Okay. Reorganization scheme. The preference shares to be written down to rupees 75. Rupees है ना ये? Rupees 75 and equity shares to rupees 2 each. Now, first question to yourself. Written down means it's a reduction. Now, question to yourself whether it's a reduction in face value or paid up value. सर ने 2 रिडक्शन सिखाए. By looking into question, how I'm going to understand it? Is it from face value or is it from paid up value?
See, in the second line, equity shares of rupees 2 each is to be allotted. If you see this sentence, then directors, we are giving rupees 2, share of rupees 2. So if you see these sentences, after the first adjustment, you will understand this new face value is rupees 2 by looking into adjustment, other adjustments. And then you will understand this is the reduction in the face value or not in the paid up value by looking into different adjustments. Ki new equity share of rupees 2 each to be allotted for the remaining quarter. So this is reduction in face value. So compound entry, capital to capital reduction. Got the concept? How many shares are there? See, how many shares? I'm not asking face value. 4,000 and 75,000. So your 4,000 multiplied by 75. And here, how many equity shares are there? 75,000 equity shares into 2. Got the concept? So my entry will be equity share capital account, preference share capital account debit 1A, preference share capital account debit 2 preference share capital, 2 capital reduction, and equity share capital account debit face value 10, 2 equity share capital face value 2, 2 capital reduction, balancing figure. This is the first entry. Check. A and B. Don't refer answer. I will show you. See how I have written it. Roman 1, A, B. So Roman 1 to Roman 1. Okay. Roman 1, A, B. We will pass 2 entries. Now second entry is IMP. Check whether you are getting this entry or not. Of the preference dividend. Now what is the preference dividend? What is the preference dividend rate? 7,50,000. No, sorry. 4 lakhs into 6%. What is my dividend rate? 4 lakhs into 6%. In arrears for 4 years. But 3/4 is to be waived. And for 1/4 quarter. So out of 4 years, only 1/4 you allotted equity shares. Think logically. Whether there is any liability of dividend in the balance sheet. If no, do not cancel any liability. And whatever you are paying will be debited to capital reduction account and credit whatever you are issuing. एक बार शांति से ध्यान में रखिए ये एंट्री को कि प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में है. पहले चेक करो कि मेरी कुछ लाइबिलिटी दिख रही है क्या. यदि वो लाइबिलिटी मेरी दिख नहीं रही है तो मुझे क्या करना चाहिए ये भी समझ लीजिए एंड टेल मी द आंसर. शायद तो दिस इज द IMP एंट्री एंड यू कैन नोट डाउन it in your list of 14 entries. This entry. Okay, sir. पलक जी म्यूट कर दीजिए. देखिए, first check whether there is any liability.
No. So I'm issuing equity shares of rupees. How much? 6%. 4 lakh into 6%. How much? 24,000. And one share of 2 rupees. So I will issue 12,000 shares. Got the concept? So my entry will be, see, there is no liability of 4 years. It is called as contingent liability. We never show dividend as a liability, preference dividend in arrears as a liability. We always show it in the notes that arrears, how we present it in the balance sheet, arrears of 4 years. Preference dividend is in arrears for 4 years. So this is not a liability. You won't get a liability side any preference dividend. So there is nothing to cancel, correct? But now this liability I have to pay in the form of equity shares for only 1 quarter. Sir, what about 3 quarters? 1/4. What about 3? Do nothing. Okay. 3 का कुछ भी नहीं करना है. 3/4 का. Only and only 1/4 you will pass the entry. And what will be the entry? Capital reduction account debit to equity share capital of 24,000. Sir, my liability is 96,000, but do nothing for 96,000. You have to pass only for 1/4 quarter. Got the concept? Very simple. देखिए, 4 लाख शेयर्स थे, 4 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था. एक बार हिंदी में समझ लीजिए, 6% मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड था. तो भाई साहब ये जो है ना, ये मेरी लाइबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मैं कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स ये बैलेंस शीट में दिखाता नहीं हूं. सर फिर कैसे शेयर होल्डर को समझेगा? नीचे नोट्स में लिखा जाता है. इसको बोलते कंटिंजेंट लाइबिलिटी. मेरे पास प्रॉफिट आया तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा भाई. तो इसलिए फिर मैं अभी उसकी प्रोविजन नहीं करके रखता हूं. पिछले इतने सालों से लॉस में हूं, कहां से मैं डिविडेंड की प्रोविजन करके रखूं? मैं डिविडेंड पैसा आया तो दूंगा, ये मैं शेयर होल्डर को नहीं, मेरे फाइनेंशियल रीडर को बता देता हूं. तो मैं नीचे बैलेंस शीट में सिर्फ नोट देता हूं. हिंदी में समझ लीजिए. तो सिर्फ नोट दी रहेगी. और अभी आपको बोला गया कि भाई 4 साल का जो एरियर्स था, उसमें से 3 साल का हम लोग नहीं देंगे. प्रेफरेंस होल्डर बाद में बोले कि ठीक है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा. ठीक है, मतलब सपोज मेरे बीवी को भाई है, अभी भाई को बेटा पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने दे दी मेरे सास ससुर ने, और मुझे सिर्फ लगा कि ठीक है, मुझे एटलीस्ट एक स्कूटर तो दे दी, तो बेटा कुछ तो मिला. इस तरीके का वो कॉन्सेप्ट है कि 4 क्वार्टर्स का, 3 क्वार्टर्स का छोड़ दीजिए. छोड़ दिया तो उसकी एंट्री करनी नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ था ही नहीं. पर 1 क्वार्टर का जो दिया तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. पर डेबिट में कैपिटल रिडक्शन आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी थोड़ी है अपने पास कैंसिल करने के लिए. सो ये मत सोचे कि सर 4 क्वार्टर को 3 क्वार्टर को क्यों छोड़ दिया उन्होंने, 3/4 क्यों छोड़ दिया. भाई छोड़ दिया, अभी अभी उसको क्या कर सकते हैं? अभी ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्रेफरेंस होल्डर्स को. कुछ नहीं मिलने से अच्छा 24,000 तो मिल गए ना अभी. तो ये समझ लीजिए, ये होता है एंट्री. 4 lakhs इंटू 6% इंटू 4 इंटू 1/4, 24,000. ये क्या होगा? आई एम गोइंग टू pay it in the form of equity share capital. But there is nothing to cancel for a liability because it is a contingent liability. It is never recorded in the balance sheet. So मैं entry क्या करूंगा? Capital reduction account debit to equity share capital trade pen entry. Only for that part, 24,000. And here students are making mistake. So for equity share capital को कैसे cancel किया जाए? शायद तो वेरी क्लियर बेटा. Yes, पूजा sir. जी क्लियर Very एकदम. कितने लोगों को ये एंट्री आ गई थी ऑलरेडी? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस एंट्री? रश्मि जी पता थी आपको? यस, रेज योर हैंड. ओनली कशिश एंड लक्ष्मी. नहीं वेरी सर. गुड. अभी समझ में आई रश्मि आपको ये एंट्री पूरा डिटेल में? चलिए, नाउ थर्ड वन. थर्ड वन इज वेरी सिंपल.
Interest payable on debentures to be paid in cash. Interest payable on debenture 22,500 दिख रहा है क्या आपको? Is paid in cash. So liability is there and we are going to cancel. Think, I will answer it. कशिश क्या एंट्री होगी बेटा? Sir, interest payable to cash. Very good. 22 Interest payable to 500. 22,500. So we are done with this entry. Third entry is not difficult, so don't write IMP. हाँ, fourth is IMP. Debenture holders have agreed to take over the freehold property of book value 1 lakh at a valuation of 1,20,000 in part repayment of their holding and provide. So here first one is over and provide additional cash. It's very simple. Secured by a floating charge on company's asset at 8% per annum interest. Normally 90% students will think, oh baap re, kya hai ye? It's very difficult or what? No, not at all. Debenture holders. What is the balance in debenture holders? 3,75,000. देखिए अभी सोच के देखिए, शांति से बोलिए. They have taken one freehold property. Sure. Check. What is the valuation of freehold property? Book value 1 lakh and we have done the valuation of 1,20,000. So my entry will be 6% debentures account debit. My liability is getting cancelled by 1,20,000. But my asset, I'm giving only of 1 lakh book value. Book value cancelled. So my profit is 20,000. So capital reduction is credited. So this is the IMP entry. If you think logically, you will get the answer. My liability is getting cancelled by 1,20,000. My property is getting cancelled by 1 lakh book value and my profit is 20,000. And now second part, I need 1,30,000 and for that I issued 8% debentures. Okay. So bank account debit to 8% debentures. This is the valuation. Bank account debit to 8% debentures. This is red pen entry. Both entries are important. Roman 4. Like preference shares dividend. These entries are also important. Patents and goodwills to be written off. What is a patent? 1,30,000 and 37,500. Goodwill. So capital reduction account debit to patent to goodwill. Is it difficult? No, sir, not at all. Fifth one is very simple. So we're done. We have done this. Now in our math, we are having, combined entry for this. So we will pass separate entries. In math, I think we are having combined entry. You can pass separate entry. Combined entry in math, study math, but I will pass separate entries. Next entry.
Inventory is written down by, please check whether it's by or to. This will not give you marks if you are wrong in by and to. So written by. So written by means niche hi lana hai. So here capital reduction account debit to inventory 65,000. Okay, very simple. So to or by, please don't get confused for by and to. Amount of 68,500 to be provided for bad debts. Capital reduction account debit to debtors or provision for doubtful debts. And you will show it as a deduction from debtors. So capital reduction account debit to provision for doubtful debts. Next entry. Remaining freehold property after giving to debenture holders. So now what is the remaining freehold property? 1 lakh we have given, no? 1,20,000 nahi, book value 1 lakh. Take book value 3,25,000. And it is now having the value of 3,87,000. So what is the increase in the value? Take on calci 387,500 minus 3,25,000. 62,500. Check freehold property account debit to capital reduction 62,500. 62,500. Next. Investment to be sold for 1,40,000. Now what is the value of investment? Check book value 55,000. 55,000. You sold it for 1,40,000. So you're in profit or loss? Profit. Profit of how much? 140, 55. देख ना यार, इतना slowly क्यों करते हो? जब जल्दी जल्दी करो ना. Sir, 85,000. 85,000. So bank account debit to investment to capital reduction. Bank account 1,40,000 to investment 55,000 book value to capital reduction. फटाफट करने का बेटा, ऐसा आराम से बैठे नहीं रहने का. So bank account debit to investment to capital reduction. Next. Directors to accept of their loan as 90% thereof by allotment of equity shares, 5% in cash and balance 5% is waived. Now what is the loan to director? Check. 1 lakh. For 1 lakh, they agreed for equity share capital of 90,000, cash 5,000 and capital reduction 5,000. It's very simple. So director's loan account debit to equity share capital to bank to capital reduction. I don't think this entry is difficult one. Now this is the IMP entry. There were capital commitment totaling rupees 2,50,000. These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as penalty. Now first ask to yourself, what is capital commitment? Capital commitment is a contingent liability. I have taken one contract. Okay. Suppose if I have some food business, I have taken some commitment of party order, and that party order, they booked any customer, they booked a party order, and on before 3 days, I cancelled that contract due to non-availability of my cook.
on that day. In that case, I can cancel that contract by paying some penalty. I will pay some amount to that person. Sorry, at last minute, I canceled your contract before 4 or 5 days, not at last minute. So you please check other caterer and you can give catering to that person. Now my loss is full contract amount or only that penalty part? Yes. एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया, हिंदी में बता देता हूं, एक फूड कॉन्ट्रैक्ट, और 4 दिन पहले 3 दिन पहले मुझे समझ में आया कि मैं ये कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा आचार्य ही वहां पे नहीं है। मैंने पार्टी को बोल दिया कि भाई साहब समझ लीजिए, आपको मैं दूसरा केटरर भी देता हूं पर मेरे साइड से नहीं हो पाएगा और ऊपर से मैं पेनल्टी भी देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट था 2,50,000 का, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। पूरा मेरा लॉस हुआ जो कमिटमेंट मैंने दिया था, या ओनली पेनल्टी का लॉस होगा? यस कशिश। सर पेनल्टी का लॉस होगा। और ये कैपिटल ठीक है। कमिटमेंट बैलेंस शीट में दिखता है क्या बेटा एज अ लाइबिलिटी? नहीं सर। नहीं सर, इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगेन। और वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी मींस आई हैव टू finish that contract of 2,50,000 and 2,50,000 into 5%, 12,500 is my penalty. So entry will be red pen entry, capital reduction account debit to bank account. I will pass entry, capital reduction account debit to bank account. How much? 12,500. रूहानी बेटा लेट क्यों आते हो आप? Sir, I was unable to join on Zoom, so I was taking the class from YouTube. You have Sir, I schedule was other? taking the class from YouTube. Okay. But always join, try to join on Zoom, no? Yeah, sir. Due to network issue, I was unable to join. नेटवर्क इशू। तन्नू जी आपका क्या? आप भी लेट ज्वाइन होते हो? No, sir. YouTube पे ही देखते हैं। यहाँ पे आइए, आंसर दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सो टेक अ बेनिफिट। आपके अच्छे के लिए है। मैक्सिमम इंडिया के बच्चों ने एटलीस्ट सबने बहुत अच्छे से ये बेनिफिट लेना चाहिए एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मतलब एटलीस्ट मैं मेरे क्लास के बारे में तो ये बोल ही सकता हूँ, आप मेरे सेशन में आके कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, बस यही मैं चाहता हूँ। चलिए, नो प्रॉब्लम। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,500. So now we have finished with this entry. How many IMP entries are there? Sir, 3 Total INP entries. IMP, sir. See, sir. 3 entries, which are very unique entries, which were not taught in the class before. That 14 entries are not there. In that, you don't have these 3 entries. So now your duty, ki in that 14 entries, you will add all these 3 IMP entries. Okay. So आपकी 100 पेजेस की बुक बन जाएगी इससे। लक्ष्मी जी, आपको कितने एंट्रीज याद थे इसमें से, या सभी एंट्रीज याद थे? यस सर, सभी एंट्री याद थे, सिर्फ एक में मिस्टेक हो गई। कौन से एंट्री में मिस्टेक हुआ बेटा? और सर डिबेंचर वाले में लास्ट वाला कैश प्रोवाइड करता है ना, 1,30,000। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, नाउ वी विल कैलकुलेट कैपिटल रिडक्शन बैलेंस ऑन कैलसी। चलो, सो फर्स्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट था, तो टेक ऑन कैलसी। कैपिटल रिडक्शन है तो 1 लाख, एंड वेन एवर देर इज डेबिट वी विल माइनस इट, एंड वेन एवर क्रेडिट वी विल एड इट। सो टेक ऑन कैलसी, कैपिटल रिडक्शन को ऐड किया 1 लाख, अगेन कैपिटल रिडक्शन, सो 6 lakhs एड। नाउ डेबिट है तो माइनस 24,000। फोर्थ एंट्री, थर्ड एंट्री नो, फोर्थ एंट्री add 20,000, add 20,000,
थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ बिकॉज बहुत ही येलो येलो हो गया. बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिविजन. नो. देन डेबिट. डेबिट है तो माइनस है. माइनस 167,500 माय डियर. देन अगेन डेबिट 65,000 माइनस. अगेन डेबिट 68,500. डेबिट है तो माइनस. क्रेडिट प्लस 62,500. Again credit 85,000 add. Again credit 5,000 add. Debit minus 12,500. How much you are getting? 5,35,000, sir. 5 lakh. 5,35,000. Yes. And hidden adjustment we have cancelled. Hidden adjustment we have cancelled. And now why we cancelled bank OD that I don't know. But इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है ना बेटा. मैट में दिया हुआ है क्या लास्ट एंट्री. कैपिटल सॉरी बैंक ओडी टू बैंक किया है क्या एंट्री. नहीं ना. हाँ. सो वी हैव टू कैंसल बैंक ओडी टू P&L. ऐसा कुछ एंट्री नहीं है ना. नहीं सर. No, sir. नो. सो कैंसल नहीं करना है आपको. हाँ. आई थिंक इन बैलेंस शीट नो कैश एंट्री. अवेलेबल है इसलिए उसको तो वी कैंसिल विल करना. मेक अ चेंज. वी विल मेक चेंज इन नेक्स्ट. मुझे प्लीज लिख दीजिए फटाफट वो. तो कशिश जी मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे ओके सर. कि ये ऐसा एडजस्टमेंट था जो हमें कैंसिल नहीं करना है. चलिए. बैलेंस होगा तो कोई P&L के साथ क्यों उड़ाएगा. कुछ भी बोलते हो आप. अरे बैंक ओडी के साथ कैसे ये उड़ाएंगे. बैंक ओडी टू P&L है वो. P&L कहाँ से आया. बैंक ओडी को क्यों कैंसिल करना है. दिया ही नहीं तो भी हम लोग ऐसे ओडी कैंसिल कर देंगे क्या. माफ कर दिया किसी बैंक ने अपने को. दिया है क्या उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसे. नहीं. चलो. नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट द क्वेश्चन. नाउ हाउ टू पास द हाउ टू write the answer. Now it's not over. Now it's time to create a balance sheet, new balance sheet. 6% preference share capital. So capital में से माइनस करेंगे 4 lakhs and we will write 75 each. How much? 3 lakh. 3 lakh rupees. 75 each. Update your question balance sheet. 3 lakhs rupees by pencil. Huh? In exam also you can write in very small, handwriting, and then you can erase it after tallying. It is not recommended, but still you can take a risk. Easily you can write over there, fatafat, and then you can scratch it or erase it by pen. Please write it by pencil on question paper. And if suppose examiner doesn't allow you, better then stop. Otherwise copy case हो जाएगा आपके ऊपर. But make sure कि आप किसी को बताएं नहीं और उनको समझाएं कि I am not doing any copy because this question is big question, so I have to write some figures over there to recall the concept. So equity share capital, I'm going to write minus 7,50,000 and rupees 2, 1,50,000. You can write rupees 2, 1,50,000 equity share capital. So first effect over. Second entry over. Second entry में Roman 2 equity share capital 24,000 credit. Credit है तो add करेंगे. Credit करेंगे तो add करेंगे. So 24,000 in capital we are going to add it back. Second entry over.
accrued interest to cash, accrued interest किधर है? Interest payable 22,500 and cash equivalent is not there. So we will open cash account, cash and cash equivalent, and we will write minus how much? 22,500. 22,500. 6% debentures. 6% debentures. Minus 1,20,000. Real property minus 1 lakh. Okay. And capital reduction that we already closed. Bank account debit to 8% debentures. So bank account cash and cash equivalent में add कर देंगे. How much? I'm going to add 1,30,000 and we will write new in long-term borrowings 8% debentures 1,30,000. 8% debentures 1,30,000. Over. Updating over. Yes. Patents and goodwill 0 कर देंगे. So minus 1,30,000 minus 37,500. 0 कर दो. Inventory. How much you are getting reduced? 65,000. You are going to reduce 65,000. ये भी हो गया. Provision for DD 68,500 over freehold property कितने से ऐड किया? 62,500. 62,500 ये भी हो गया. कैश अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में ऊपर हाउ मच? 1,40,000 and investment reduce goes out, no? 55,000 ये भी हो गया. डायरेक्टर्स लोन minus 1 lakh. Equity share capital add 90,000 and cash and bank balance में से minus 5,000. Minus 5,000. Minus 12,500. कैपिटल रिडक्शन को छोड़ दीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से. P&L नेगेटिव 5,35,000 उसको प्लस कर देंगे. अल्टीमेट बैलेंस इज 0. ओवर. अरे ओवर क्या? नेक्स्ट. Yes, sir. यस. नाउ डू. Sir, हाँ. बैंक और डी कैश बैलेंस का अगेंस्ट सेटअप होगा ना? Yes, sir. कैश के अगेंस्ट अभी कर सकते हो, नहीं भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी मटेरियल में हमने किया हुआ है तो आप लोग कीजिए, बट कभी कभी नहीं करते. इफ देर इज अ कैश बैलेंस यू कैन रिड्यूस योर बैंक ओडी हिडन एडजस्टमेंट. Okay, you have two choices. If you don't write, it's okay, doesn't matter, because we can call it yes, still OD is going on. So there are two assumptions. OD is still going on, so why to cancel? Second assumption, we have cash, so cancel OD. Both assumptions are correct. Okay. Yes. Yes. Chalo, now tell me the equity share capital total. 150, 24, 90. What is the balance? 2,64,000. 2,64,000, sir. Preference share capital 3 lakhs. 3 lakhs. Total. 5,64,000. So I will write in front of share capital in left hand side 5,64,000. Always write on left hand side. When final figures left hand side, add less on right hand side. On updating your question balance sheet 5,64,000. This is 0. Borrowings 130 8% and 375 minus 120 255. So what is the total? 3,85,000, sir. Very good, beta. 3,85,000. I am going to write over long-term borrowings. In amalgamation, you have done the same thing. ऐसे ही किया ना आपने amalgamation में भी. 0, 0, 0. So other current liability, I will do
ट्रेड पेबल एज इट इज 3 lakhs, जो है पहले नीचे का लिख लो बेटा, और 0, एंड बैंक कोडी यू कैन रिड्यूस। अभी इंस्टीट्यूट ने मैट में रिड्यूस किया है, सो वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट। सो कैश एंड बैंक बैलेंस देख लीजिए पहले, 130 प्लस 140 -5 -12.5 -22.5, 2,30,000 आया क्या? Yes, sir. And 230 we will pay 1,95,000 bank OD, and here you can write minus कितना था 195. So how much is the cash balance I have? 35. 35,000. 35. Cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent 35,000. Suppose if you are not getting same figures, please do it afterwards. It's okay. You have to check all questions entries. Next. Goodwill, no, assets. Assets में plant will be as it is, 50,000, and freehold property 387,500. So total is 437,500. I will write over 437,500 over here in property, plant and equipment. Intangible assets 0, non-current investment 0. So 0, 0. Inventory 425 minus 65, 360. And this is 485 minus 68.5, 416,500. Now take a total of liability, 564 plus 0, 385 plus 300, 12,49,000, and 437.5 plus 360. Yes, 12,49,000. I'm getting the same figure. Difficult or easy? Easy, sir. 12,49,000. Understood the way, sir? Minutes 35 minutes in exam. 16 marks से problem आएगा. 16 marks multiplied by actually 1.7 minutes. You have maximum 28 minutes, but 5 minutes extra I'm giving you. Why? Because other questions of accounting standard or multiple choice question MCQ in first 30 minutes, first 30 marks questions, you may take some less time, but these questions will really take more than 30 minutes definitely. And when you are solving it for the first time, you will definitely take more than 1 hour. Don't worry, take your own time, and when you solve for the second time, third time, then you will take lesser time. Okay, this is like diminishing marginal utility, DMU. Okay, so similarly this will take reduction in the time. So first time don't worry, sir, I am taking 1 hour. It's okay. पूरा लिखने को time लगेगा. So any doubt in this illustration now? At least, see, I can't solve each and every illustration of internal reconstruction in one day. We need at least 2 to 3 days to solve each and every question. But मैंने आपको flow दे दिया. अभी I don't know, you can see past recorded lectures of internal reconstruction. लिया था क्या मैंने batch 7 में? Batch 7 में internal reconstruction. Otherwise, you can find on YouTube Sanket Shah and internal reconstruction. You will get the YouTube video. Okay, आपको मिल जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूट्यूब पे. सो BOS में आपको मिल जाएगा, आई थिंक सो. ये लिया हुआ है क्या नहीं लिया हुआ आई डोंट नो, बट इन लास्ट बैच आई हैव नॉट टेकन दिस चैप्टर. हाँ, बट नाउ यू आर क्लियर विथ दिस कॉन्सेप्ट्स, रिडक्शन, एनी डिफिकल्टी नाउ? Yes, now it's time for question answer.
यस पूजा बोलिए। सर एक एडजस्टमेंट है, मतलब क्या मैं पूछ सकती हूँ? जैसे सर इसमें ना बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है नॉमिनल वैल्यू 6 लाख, और वैसे दिया हुआ है 5,76,000 ओन डिवेंचर है सर। और बाहर एक एडजस्टमेंट दी हुई है, ओन डिवेंचर ऑफ 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू वर सोल्ड एट 98 कम इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग ओन डिवेंचर वर कैंसिल्ड। सर मुझे इसकी स्टडी मैथ का क्वेश्चन है ये। नहीं सर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है। अभी देखो, ओन डिवेंचर्स ये कॉस्ट पे कैंसिल होते हैं, और डिवेंचर्स ये फेस वैल्यू पे कैंसिल होते हैं, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। समझा? या डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ओन डिवेंचर कॉस्ट हाँ, कैंसिल हो कॉस्ट पे जाता है। कॉस्ट मतलब एक्स इंटरेस्ट। अभी एक्स इंटरेस्ट कैसे, अभी उन्होंने कम इंटरेस्ट दिया होगा, तो यस यू सर, हैव टू इसमें कम कन्वर्ट। इंटरेस्ट 98 है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? अभी कम इंटरेस्ट का उन्होंने नंबर ऑफ मंथ्स भी दिया होगा, ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ मंथ्स आर नॉट गिवन, तो वो आपको नो प्रॉपरली दे। मंथ नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ तो है ऑन इंटरेस्ट। बैलेंस शीट के अंदर नॉमिनल वैल्यू 6 लाख है, और वैसे ये दिया हुआ है 5,76,000 का। ओन डिवेंचर्स। यस सर, फेस वैल्यू है 6 लाख, और वैसे दिया हुआ है ये 5,76,000 का तो है। बैलेंसिंग फिगर 24,000 इज इन कैपिटल रिडक्शन। और सर समझा? इस एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि ओन डिवेंचर ऑफ 2,40,000 वर सोल्ड एट 98 कम इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग ओन डिवेंचर वर कैंसिल्ड। 2,40,000 जो मतलब सोल्ड किया वो नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है। कितना? 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू है सर, जो कि सोल्ड किया है 98 कम इंटरेस्ट पे। हाँ, और इसकी 6 लाख की थी, तो देखिए 2 लाख, यही सेम क्वेश्चन में। यस सर, हाँ, सो 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू है, ये नॉमिनल एडजस्टमेंट है वैल्यू है। सर। ओके, टोटल 6 लाख के डिबेंचर्स की फाइव लैख फेस सेवेंटी वैल्यू है। सिक्स थाउजेंड कॉस्ट है। यस, यस सर, करेक्ट है। यस तो सर। 2,40,000 की कॉस्ट कितनी? फर्स्ट फाइंड आउट दैट। ओके, 2,30,400, this is a cost, and you sold it at 98,000, 98 कम इंटरेस्ट, so 98 loss। हाँ, अभी कम इंटरेस्ट की डेट भी दी रहेगी ना उन्होंने फिर। नहीं डेट सर, भी इसमें कोई डेट नहीं दी हुई है। नहीं, फिर 98,000 यू विल कंसिडर, कम इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज 98,000 नहीं है सर, 98 रुपीज कम इंटरेस्ट दिया हुआ है। 98 रुपीज कम इंटरेस्ट, तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, तो 2,40,000 की कितनी? 2,35,200, so your profit will be 5,200. Got the concept? 2,40,000 face value, so you will divide by face value, and this is come right price, this is a cost, acquisition cost, selling cost, selling price. So selling price is 98, so 240 में 98 मतलब 235,200, and what was my cost? 2,30,400. 2,30,400, no, sorry. यस सर। So 4,800 दिया है क्या? देख आंसर में 4,800 इज प्रॉफिट। सर अभी इसका आंसर नहीं है मेरे पास, मुझे इसकी एडजस्टमेंट पूछनी थी आपसे कि कैसे आएगी। And remaining you cancelled. So cancelled means now what is the remaining value out of 6 lakhs? 5,76,000 is my cost. So 240 I reduced it. So 3,60,000. What will be my cost? 345 600. And this 345 600 I cancel with 5,76,000. So my profit will be debentures account debit to, सॉरी इसका भी मुझे 3,60,000 इनके साथ ये कैंसिल करना पड़ेगा। सो 360 माइनस 345.6, 14,400 इज माय
profit. That is to capital reduction. See how to solve this type of question. I don't know now from where you searched it. See, 6 lakhs. What was my cost? 5,76,000. Yes, sir. This is the face value. Now, out of this, one is cancelled and one is sold. Say yes or no. Yes, sir. Sold for rupees 98, having 100 face value. Yes, sir. Okay. Now, what is my selling price? For 6 lakhs, for 6 lakhs is a face value divided by 100 is a normally one debenture ka face value. No, I sold 2,40,000. No, beta. Yes, sir. 2,40,000 nominal value. Nominal value is 2,40,000 and my selling price is 98. Got the concept? Yes, sir. So what is my selling price? 2,35,200 is my selling price. Yes, sir. What is my cost? 5,76,000 for 6 lakhs. Yes, sir. So for 2,40,000 face value, what will be my cost? 2,30,400. So Yes, what sir. is my profit? 4,800. Yes, Got sir. the concept? Yes, sir. And now I cancel 2,40,000. Sorry. Now, what is the balancing figure of face value? 6 lakhs minus 2,40,000. So you left with 3,60,000 face value. And what is cost? 5,76,000 minus 2,30,400. Yes, sir. 345,600. And now you cancel this. So what is the profit? 14,400. What are my entries? Bank account debit 235,200. To own debentures 2,30,400. To capital reduction 4,800. And here I am going to cancel these debentures. So debentures account debit 3,60,000. To own debentures 3,45,600. To capital reduction 14,400. Easy. Yes, sir. You can take a screenshot if you want. कौन से ईयर में आया था ये क्वेश्चन? डू यू हैव सम रेफरेंस? सर ये मतलब लास्ट उसका ही है May 24 का. May 24 में आया था. इजी था, मतलब ट्रिकी था, बट दिमाग लगाया तो इजी था. ओके May सर. 24 मतलब अभी के एग्जाम में. यस सर. गुड क्वेश्चन. नाउ यू गॉट द आंसर, नो? यस सर. डू इट प्रॉपरली. थोड़ा सा है मुश्किल, बट दिमाग लगाया तो बहुत इजी था. यस. एनी अदर क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था कशिश, ये देख लेना बेटा ये क्वेश्चन. Yes. ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए विदाउट माय हेल्प. फिर आप लोग छोड़ देते हो ये क्वेश्चंस को ऑप्शन में कि सर ने लिया ही नहीं था. बट इफ यू यूज योर ब्रेन के डिबेंचर्स को, एक डिबेंचर सोल्ड किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और एक डिबेंचर कैंसल किया तो हमने कल ही एक बायबैक में एंट्री देखा था, ओन डिबेंचर कैंसलेशन. तो डिबेंचर्स टू कैपिटल रिडक्शन था. कल हमने कैपिटल प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन में डाला था, आज हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, रिडक्शन में डाल दिया. टॉपिक देख के आपको याद करना है. यदि वो इस बायबैक में आता है तो आपको प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन लिखना था, यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन करना था.
समझी गई? Yes, sir. यस, थोड़ा सा। और बेचा, बेचा तो हम लोग कॉस्ट, ओन डिबेंचर्स कॉस्ट पे बेचते हैं, कॉस्ट की सेलिंग प्राइस, फेस वैल्यू से सेलिंग प्राइस निकाली एंड कॉस्ट भी फेस वैल्यू से निकाली, ये कैलकुलेशन किया होता तो फिर तो बहुत आसान गया होता। क्या लगता है पूजा आपको? सर कम इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या क्या क्या? सर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में थोड़ा कम, क्लियरिटी नहीं है। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट उन्होंने दिया ही नहीं है ना बेटा तन्नू। नहीं तो मैं बाइफरकेट भी कर दिया रहता, कम इंटरेस्ट होता तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में नहीं पढ़ाया था ना आपको। यस सर। तो कम इंटरेस्ट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे बेटा? फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, फिर हम लोग इनर कॉलम में फेस वैल्यू में ए लिखते थे, बी इंटरेस्ट सी कॉलम एंड डी कॉलम में कॉस्ट। कम इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, पर अभी डेट ही नहीं दिया हुआ है ना उन्होंने। अभी इसने जैसे बताया कि डेट ही नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कम इंटरेस्ट को ही एक्स इंटरेस्ट एज्यूम करेंगे। नो सर क्वेश्चन में है इंटरेस्ट डेट दिया हुआ है। इंटरेस्ट का डेट दिया हुआ है, फिर देना चाहिए था, यस इन्होंने सर। डेट दिया तो फिर आपको सिर्फ ये इंटरेस्ट माइनस करके फिर ये अमाउंट आ जाएगी, ये जो कॉस्ट आएगी वो आपकी इंटरेस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, जो है सेलिंग प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस कर देना, जो भी है नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से। अभी मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा उसके लिए। नहीं सर, इसमें इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो डिबेंचर का दिया हुआ है, ऑन डिबेंचर का नहीं दिया हुआ है। ओन डिवेंचर का चाहिए भी नहीं। सेल कौन से दिन पे किया, सोल्ड डेट दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो सेलिंग डेट ऑन देख लीजिए, फर्स्ट। अभी वो इजी है, सेलिंग का डेट दिया रहेगा तो इजी है। डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, मतलब एग्जाम में इस टाइप के एडजस्टमेंट सपोज नाउ, हाँ सर, नाउ सर आई डोंट नो दिस एग्जाम में दिस एडजस्टमेंट, नाउ व्हाट टू डू? नहीं दिया हुआ है सर इसमें। नॉट गिवन ना, देन छोड़ दीजिए, फिर कम इंटरेस्ट ही एक्स इंटरेस्ट है। नाउ द क्वेश्चन, सपोज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। है सर 31 दिसंबर, क्या? सॉरी मार्च। इंटरेस्ट डेट तो दिया हुआ है सर 31 मार्च, बट इसमें कोई सेल डेट नहीं है, वे कब सेल सेल डेट नहीं है तो है। फिर नहीं कर सकते, फिर सेल डेट नहीं तो वी कैनॉट बाइफरकेट, तो विल एज्यूम वी सोल्ड इट ऑन द 1 जनवरी और अप्रैल, ऐसा एज्यूम करेंगे, सो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। एक्चुअली फिर थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने वो सोचा नहीं इतना, ही हैज रिटन दैट कम इंटरेस्ट बट देन इट इज रॉन्ग लॉजिकली, डेट देना चाहिए था। आई वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट, बट यस डेट हैज टू बी मेंशन इन द एग्जाम इफ वी हैव रिटन कम इंटरेस्ट। देखो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ बट आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी कैसा होता है। देन इन दैट केस वी हैव टू एज्यूम कम इंटरेस्ट इज ओनली एक्स इंटरेस्ट। मुझे ये एडजस्टमेंट कैसे अभी तक। सर हाँ, इसमें दिया हुआ है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, एंड ये जो एडजस्टमेंट है वो 1 अप्रैल 2024 की है। तो 1 अप्रैल 31 मार्च ना, देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट। यस सर, ऑलरेडी पे हुआ है। यस, तो 1 डे का इंटरेस्ट तो नहीं लेंगे हम लोग, तो ठीक है, फिर अपना आंसर करेक्ट है। अभी समझ में आया ना आपको आंसर पूजा? यस सर। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज सर, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आए तो व्हाट वी कैन डू बेटा? लीव सम स्पेस फॉर वर्किंग नोट, बिकॉज दिस विल नीड सम वर्किंग। अभी आप लोग मुझे डायरेक्टली भी पूछोगे एज आई एम अ फैकल्टी तो मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा, बट एट स्टूडेंट लेवल इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, नाउ वही सॉल्व कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, वो जो ऐसे बाइफरकेशन कर पाता है इजीली। 6 lakhs में से 5,76,000, देन पार्टली सोल्ड एंड पार्टली कैंसल्ड, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा एंड हो सकता है कि एग्जाम में यू मे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, तो लीव दैट एडजस्टमेंट, बट अदर एडजस्टमेंट एक्चुअली यू कैन डू वेरी इजीली, correct? So other journal entries at least you can do, and debentures, apart from debentures you can prepare, update your trial balance, balance sheet. Don't get nervous, एक आधा एडजस्टमेंट नहीं आया फिर भी एक दिमाग में रखो कि वी आर हैविंग स्टेप मार्किंग, एंड सपोज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, so it's not difficult for only you, it will be difficult for 90% of ICS students. एंड यहां पे आपकी मेंटेलिटी है ना, वो काम में आती है।
You don't find every time a same pitch in international cricket. Remember this rule. Now, USA pitch was worst for playing World Cup. That was a bad decision which is taken by the ICC. USA pitch. But it doesn't mean ना वर्ल्ड कप स्टॉप हो गया. ठीक है, उल्टा पूरा उलट फेर हो गया, पाकिस्तान हार गई क्योंकि वो मेंटेलिटी से खेले नहीं. और इंडिया की मेंटेलिटी स्ट्रांग थी, उन्होंने लास्ट तक गिव अप नहीं किया. बुमराह की बॉलिंग देखिए. सो यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, कि जरूरी नहीं कि मुझे हमेशा संगत सर ने पढ़ाया हुआ पूरा एग्जाम में आया. इट माइट हैपन कि आपको एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चंस आए, बट इट डजंट मीन कि 120 भी डिफेंड किया ना हम लोगों ने, तो कम स्कोर भी डिफेंड करते आना चाहिए. जो मैं कर रहा हूं स्टेप मार्किंग मिलने वाला है, ये मेंटेलिटी होनी चाहिए. और जब तक आप पॉजिटिव मेंटेलिटी पे नहीं जाओगे तब तक बहुत मुश्किल है. सो एग्जाम में प्रेशर लीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा, बट वो पेपर डिफिकल्ट आया, अगला पेपर इजी आने वाला है. और डिफिकल्ट मतलब क्या, एक हाथ दो एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है. इट डजंट मीन दैट फुल पेपर इज डिफिकल्ट. यू कैन रीड अदर एडजस्टमेंट्स. पूजा जी, अदर एडजस्टमेंट्स बताइए, इज इट डिफिकल्ट अपार्ट फ्रॉम नो डिबेंचर्स? बाकी सभी ठीक आसान थी सर, बाकी सभी तो ये क्वेश्चन से ही दी गई थी, यही मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट सी लगी। नहीं, ये सब था डिफिकल्ट, आई एग्री. मैं होता आपके जगह पे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं एट दैट टाइम इन दैट 3 hours. बट अदर एडजस्टमेंट आई कैन डू इजीली. नो, बैलेंस शीट बनानी थी क्या नहीं बनानी थी? नो सर, इसमें केवल तो कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट और जर्नल एंट्री करनी थी। बस फिर तो क्या है, 2 मार्क्स गए होते मैक्स. 6 मार्क्स तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? चेक सर ये इट. क्वेश्चन 14 मार्क्स का था सर। 14। 14 मार्क्स. 14 मार्क्स में से 3 मार्क्स भी गए. 10 मार्क्स तो इजी थी. 4, चलो 3 भी नहीं, मैं 4 लेता हूँ. 2 फॉर कैपिटल रिडक्शन का ये एडजस्टमेंट, दिस कैपिटल रिडक्शन एंड दिस कैपिटल रिडक्शन, ये 2 मार्क गए. 2 मार्क एंट्री के गए. चलो 1 मार्क बैंक बैलेंस का भी गया. चलो 5 मार्क्स गए. 9 मार्क्स तो इजीली स्कोर हो सकता था. स्टेप मार्किंग इज देयर, बट स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इट, वन एडजस्टमेंट एंड यू गेट नर्वस कि हो गया खत्म. पर आप ये मेंटालिटी से खेलना सीखो. पेपर में हर क्वेश्चन सेम नहीं आने वाला है. रिमेंबर दैट. ओके, चलो. So now you do this internal reconstruction remaining questions. My sincere suggestion to you, now do this internal reconstruction after 4-5 days after completion of branch accounts. But now, branch accounts in last session I only taken. So please go through all lectures of branch account, almost at least 4-5 lectures, because we have actually 2 sessions on branch accounts. No, next session कितने सेशंस है ब्रांच के देखो. ब्रांच के कितने सेशन है एक बार चेक कीजिए. नेक्स्ट ब्रांच के सेशंस और उसके बाद या एंड है, चेक करो ना एक बार. एक ही है ना, तो एक ही सेशन है ब्रांच का. अजित सर है क्या? ठीक है, देखते हैं. अजित सर को पूछ के देखता हूँ. ब्रांच अकाउंट्स बड़ा चैप्टर है. सो मैं 2-3 दिन आपका एक्सटेंड कर दूंगा. अगला वेडनेसडे को लेक्चर रखता हूँ. बट माय सजेशन, प्लीज गो थ्रू ऑल सेशंस ऑफ ब्रांच. नहीं हुआ तो संडे तक आपको कंप्लीट ही करना है. फ्राइडे, टुडे फ्राइडे है तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इन 3 days you can easily complete. Suppose if I take a permission to have the session on Wednesday, नहीं होता है तो मंडे को you please finish it off. Okay, so branch, please, branch तो मैंने ही लिया हुआ है. So branch you can easily do that. Okay, हो जाएगा ना बेटा पूजा? यस सर। Yes, branch को complete कीजिए. Yes, and we'll take a revision of branch because branch is very big chapter. तो वो रिवीजन सेशन जैसा ही रहने दो. और प्लीज आ जाइए, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगी तो समझ जाएगी. चलो, सो विल डू दिस. यस, थैंक यू एंड टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir.